when trees breathed through the centuries and ages spoke in the voices of birds. How astonished he was, looking all around, that everything was so new and yet looked so old. Blue jays, woodpeckers, peacocks, doves, squirrels, parakeets. It seemed that they were as young as he, yet they carried the secrets of the ages. The peacock's call seemed to come not from the forest of Rupnagar, but from Vrindaban, when a little woodpecker paused in its flight to rest on a tall neem tree. It seemed that it had just delivered a letter to the Queen of Sheba's palace and was on its way back towards Solomon's castle, when a squirrel, running along the rooftops, suddenly sat up on its tail and chittered at him. He stared at it and reflected with amazement that those black stripes on its back were the marks of Ram Chandraji's fingers, and the elephant was a world of wonder. When he stood in the entry hall and saw an elephant approaching from the distance, it looked like a mountain moving. The long trunk, the huge ears waving like fans, the two white tusks sticking out and curving like scimitars. When he saw it all, he ran inside wonderstruck and went straight to Biyamma. Biyamma, did elephants once fly? What? Have you gone crazy? Bhagatji was saying. Well, that Bhagatji has rocks in his head. Imagine such a huge, heavy animal. How could it fly in the air? Biyamma, how are elephants born? Well, how else? Their mommies gave birth to them, and then there they were. But no, Biyamma, elephants came out of eggs. What? Have you put your brain out to pasture? Bhagatji was saying. That wretched Bhagat has lost his mind. Such a big animal, an elephant, as though it could come out of an egg. Well, not to speak of coming out, how would it ever fit in the egg in the first place? But he had a lot of faith in Bhagatji's knowledge. With his sacred thread around his neck, his caste mark on his forehead, his whole head shaved except for one tuft, Bhagatji sat in his little shop, sold condiments, and told wise stories from the Ramayana and the Mahabharata. The children called out, Bhagatji, a penny's worth of salt. Bhagatji, 2 pennies worth of brown sugar. Children, don't make a fuss. Be patient. As he spoke, he weighed out the salt, packed up the brown sugar, and then picked up the story where he had left it. Children, when Brahmaji saw this, he said to Shish, Look, Shish, the earth is very unsteady these days. You give it some help. Shish answered, Master, lift it up and put it on my hood. Then it will stay still. Brahmaji said, Shish, go inside the earth. Shish saw a hole in the earth. He slipped into it. When he went inside the earth, he spread out his hood and supported the earth on his hood. When the tortoise saw this, he felt worried, for under Shish's tail was nothing but water. He went down under Shish's tail and supported it. So, children, the earth rests on Shishji's hood. Shishji rests on the tortoise's back. When the tortoise moves, Shishji quivers. When Shishji quivers, the earth shakes and an earthquake happens. जब दुनिया अभी नई नई थी, जब आसमान ताज़ा था और ज़मीन अभी मैली नहीं हुई थी, जब दरख्त सदियों में सांस लेते थे और परिंदों की आवाज़ों में जुग बोलते थे, कितना हैरान होता था वो इर्द गिर्द को देखकर कि हर चीज़ कितनी नई थी और कितनी कदीम नज़र आती थी। नीलकंठ, खुटबड़ैया, मोर, फाख्ता, गिलहरी, तोते जैसे सब उसके संग पैदा हुए थे, जैसे सब जुगों के भेद संग लिए फिरते हैं। मोर की झनकार लगता कि रूपनगर के जंगल से नहीं, वृंदावन से आ रही है। खटबुड़ैया उड़ते उड़ते ऊंचे नीम पर उतरती तो लगता कि वो मलका सबा के महल में खत छोड़ के आ रही है और हज़रत सुलेमान के किले की तरफ जा रही है। और जब गिलहरी मुंडेर पर दौड़ते दौड़ते अचानक दुम पे खड़ी होकर चुक चुक करती तो वो उसे तकने लगता और हैरत से सोचता कि उसकी पीठ पर
पड़ी ये काली धारियाँ क्या वाकई रामचंद्र जी की उंगलियों के निशान हैं? और हाथी, वो तो हैरत का एक जहान था। अपनी डोरी में खड़े होकर जब वो उसे दूर से आता देखता तो बिल्कुल ऐसा लगता कि पहाड़ चला रहा है। ये लंबी सूंड, बड़े बड़े कान पंखों की तरह हिलते हुए, तलवार की तरह खम खाए हुए दो सफ़ेद सफ़ेद दांत दोनों तरफ निकले हुए, उसे देख के वो हैरान अंदर आता और सीधा बी अम्मा के पास पहुंचता। बी अम्मा, हाथी पहले उड़ा करते थे? अरे तेरा दिमाग तो नहीं चल गया है? भगत जी कह रहे थे। अरे इस भगत की अक्ल पे तो पत्थर पड़ गए हैं। लो भला लहीम शहीम जानवर वो हवा में कैसे उड़ेगा? बी अम्मा, हाथी पैदा कैसे हुआ था? कैसे पैदा होता? मैया ने जना, पैदा हो गया। नहीं बी अम्मा, हाथी अंडे से निकला है। अरे तेरी अक्ल चढ़ने तो नहीं गई है? भगत जी कह रहे थे। बखत मारे भगत की तो मत मारी गई है। इतना बड़ा जानवर, हाथी का हाथी, वो अंडे में से निकलेगा कैसे? निकलना तो बात की बात है, उसमें समाएगा कैसे? मगर उसे भगत जी के इल्म पर बहुत एतबार था। गले में जनेऊ, माथे पे तिलक, चोटी को छोड़कर सारा सर घुटा हुआ, नोन तेल की दुकान पर बैठे नोन तेल भी बेचते जाते और रामायण और महाभारत में लिखी हुई हिकमतें भी सुनाते जाते। लड़के वाले शोर मचा रहे हैं, भगत जी 1.5 पैसे की सांभर, भगत जी देले का गुड़। बालक को रोल मत मचाओ, धीरज से काम लो। कहते कहते सांभर तोलते, गुड़ देते और फिर वहीं से जहाँ से बात को छोड़ा था सिरा पकड़ लेते। बालक को ब्रह्मा जी ने ये देखा तो शीश से कहा कि देख शीश, धरती इस समय अधिक डावाडोल है, तू वाह की सहायता कर। शीश बोला, महाराज वाह को उठा के मुँह के फन पे रख दो, फिर वो टिक जाएगी। ब्रह्मा जी बोले कि शीश तू धरती के भीतर चला जा। शीश ने धरती में एक छेद देखा और वाह में सटक गया। धरती तले पहुँच के फन फैलाया और धरती को फन पे टिका लिया। कछुए ने ये देखा तो वाह को चिंता हुई कि शीश की पूंछ तले तो पानी ही पानी है। वाह ने शीश की पूंछ तले जाके सहारा दिया। सो बाल को धरती शीश जी के फन पे टिकी हुई है, शीश जी कछुए की पीठ पर टिके हुए हैं। जब कछुआ हिले है तो शीश जी हिले हैं, जब शीश जी हिले हैं तो धरती हिले है और भौचाल आवे है।